So FCPS umbrella term recalls are here, and the question is कोर्टल फ्लूइड को हम ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट की हेल्प से डायग्नोस करेंगे. दैट इज़ दी हाइड्रोसील ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट इज डायग्नोसिस पॉइंट. सीवियर हेडेक ऑफ द लाइफ, दैट इज severe arachnoid hemorrhage is thunderclap, and hemophilia A is for factor A deficiency. Oliguria post dehydration is acute tubular necrosis. Partial agonist E makes इसको रटा लगा लें. Rhabdomyolysis is increased creatine kinase. Swallowing is the help of cranial nerve pain. Necrosis in the DNA smear. Amyotrophic lateral sclerosis में upper and lower motor neuron both are involved, and hyperreflexia, upgoing plantar surface upper motor neuron lesion, and gracilis is muscle involved in adduction, and it is also the movement helping, and clostridium gas gangrene is found done with gas gangrene is caused by clostridium perfringens. Clostridium tetani causes tetanus, and pseudomonas aeruginosa causes the blue green infection pussy, and scrotal case में painless swelling fluid around the testes, that is hydrocele. Worst headache of my life is subarachnoid hemorrhage. उसके अलावा there is a factor 8 deficiency causes hemophilia A, and factor B deficiency hemophilia B is hemophilia factor 9, एंड उसके अलावा आ गया हमारा डायरिया, वोमिटिंग, ओलिगोयूरिया एंड रेनल बायोप्सी में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है. और उसके अलावा देयर इज द रेडियल आर्टरी इंजरी रिजल्ट्स इनटू रेडियल आर्टरी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स डैमेज, एंड स्कैफोल्ड बोन मोस्ट कॉमनली वहाँ पे इंजर्ड होता है, स्कैफोल्ड बोन इन snuff box में. And then the partial agonist is the lower maximal efficiency, and then rhabdomyolysis lay finding the increased creatine kinase. Pharyngeal phase of swallowing is nerve vagus nerve. देन आता है नेक्रोसिस और डीएनए पैटर्न में डीएनए smear, एंड देन एपोप्टोसिस लेडर पैटर्न होता है. और फिर ALS एमाट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में बहुत अपर मोटर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं. अपर मोटर में स्पास्टी हाइपर रिफ्लेक्सिया होगी, लोअर मोटर में एट्रोपी एंड फेसिकुलेशंस होंगी. उसके अलावा देयर विल बी lower limb weakness, muscle will be gracilis, hip adduction is affected, and gracilis medial thigh adductor group, and gas gangrene is caused by clostridium perfringens. ओके, वेंटिकुलर टेकीकार्डिया में ड्रग होती है अमायोडेरोन. एटल फिब्रिलेशन में एंटीकोएगुलेशन देते हैं. एटल रिगर्जिटेशन में बाउंडिंग पल्स होगी, और एओर्टिक रिगर्जिटेशन में बाउंडिंग पल्स, वाटर हेमर पल्स. एलपी हेडेक सीएसएफ लीक होगा. पेनक्रियाटाइटिस में gall stone and multiple myeloma is involved in the plasma cell. Russell cells are positive, and splenic artery supplying fundus of the spleen, fundus of the gallbladder, and fundus of the stomach. Hypokalemia, hyperkalemia leads to tall T wave, and hypokalemia inverted T wave, and also U wave. So digitalis is the hockey stick ST will be there in digitalis. Toxicity, hydrocele is done with the trans elimination test. So in this way we can diagnose the disease, and parietal cells are eosinophilic cytoplasm in central nucleus. Secretin is released from duodenum S cell. You can memorize it with the help of CID. C is for CCK, C cells. I cells is for the D, CID duodenum. I is for secretin, and D for S cell. Duodenum is released by secretin. उसके अलावा there is a splenic artery ligation affairs, fundus of the stomach, hypoparathyroidism, and adrenal deficiency plus candidiasis. What will be the answer? That will be the APS1 syndrome. Okay, hyperkalemia presence with tall T wave, sloping ST depression is digitalis effect, and hydrocele is for trans elimination test positive.